Good morning, kids. In today's class, we are going to discuss the JEE Mains 2024 PYQ. The chapter name will be Electrostatics and Gauss law. If you see the Gauss law, Electrostatics and Gauss law is a very lengthy chapter. Plenty of formulas, some very tough concepts are there, easy concepts are there. What to remember? So you can give the maximum priority first for point charges, next dipole and basic Gauss law. These are things, and compulsory what when you try to revise formula. E bar due to all bodies. Remember all formulas. V due to all bodies. So these things are compulsory, which you have to remember things. So one must know the electric field due to all the bodies, potential due to all the bodies. These are the make it memorize. Definitely, you can do better very easily in exams. So as I explained, okay, then I'll be giving you the basic ideas how to deal with this chapter, rather than blindly bluffing things. As and when problem comes, what to remember, how to remember, I'll give the tips. We'll start with the first question. I have this. The distance between the charges plus q minus q is 2l. Okay, this is the one. We'll make one dipole. Then we are having the 2q and minus 2q. The length is 4l. This is another dipole. It's asking the electrostatic potential at point P. And this is a distance r given. And this is 60 degree. Okay, will manage in Hindi because most of them are not comfortable with English. यहाँ पे हमें चार पॉइंट चार्ज यहाँ पे, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज और एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज. इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 12 दे चुके हैं. और यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट चार्ज -2q + 2q ए भी डाइपोल बनेगा. तो यहाँ पे हम चार पॉइंट चार्ज या दो डाइपोल है. इस दो डाइपोल के वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट हम यहाँ फॉर्मूला रिकलेक्ट करेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला? पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. So this is equal to Kp cos theta r². यहाँ पे P बोले तो डाइपोल मोमेंट, थीटा एंगल बिटवीन P बार एंड R बार. सो एक डाइपोल यहाँ पे बना लेंगे हम. ये वो P बार, P1 बार, इसका एक डाइपोल और अलग सा डायग्राम बना लेंगे. एक डाइपोल हुआ यहाँ पे P बार और दूसरा डाइपोल ये दोनों, ये -2q चार्ज और 2q चार्ज, इसका डाइपोल होगा कितना? डाइपोल मोमेंट लेंथ कितना है यहाँ पे 4l है और चार्जेस कितना हुआ 2q -2q. इसका अलग सा डाइपोल. दोनों एक ही जगह पे रहते हैं. ए हुआ P1, ए हुआ P2. P1 का वैल्यू कितना है? P1 का वैल्यू हुआ 2lq. डिस्टेंस बिटवीन चार्ज L एंड AL है. और P2 का वैल्यू हुआ, P2 का वैल्यू है 4l. इसका हाई कैप लिख देंगे 4l 2q हाई कैप. टोटल
इसका 8L3 है। बाद में इसका फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, यहाँ पे वी हैव टू फाइंड आउट पी, और कुछ भी बोल दो। तो व्हाट इज एंगल, एंगल थीटा, और इसका हुआ एंगल से 5 रख दो। थीटा कितना है 60 डिग्री। बाकी बचे बचे एंगल कितना होगा 180 माइनस 60, इसका होगा 120 डिग्री। तो रख देंगे वहां पे पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल 1 ड्यू टू डाइपोल 2। पोटेंशियल, पोटेंशियल तो स्केलर है तो उसका स्केलर एडिशन ले लेंगे। तो इसका फॉर्मूला हुआ के पी वन कॉस थीटा आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हुआ पी कॉस फाइव आर स्क्वायर। पी वन का वैल्यू 2L3 कॉस 60 डिग्री आर स्क्वायर के, P2 का वैल्यू 8L3 कॉस 120। अगर आपको डाइपोल, अगर ये फॉर्मूला आपके याद रहे तो ये काफी इस प्रॉब्लम वाला है। अगर आपको सिंपल चेंज हर हर चैप्टर का थ्योरी, बैकग्राउंड थ्योरी, डाइपोल, और इज अ डाइपोल, यहाँ पे दो चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसका डिस्टेंस बिटवीन देम। So charge Q into 2L. Sir, minus Q, Q नहीं. No, the dipole will be directed from negative to positive point charge. Will be directed from negative to positive point charge. And उसका dipole moment कितना है formula? What is the formula? Charge into separation between charges. पहले वाला का dipole moment right side में रहता है, high cap. दूसरा वाला का dipole moment it will be towards left side. Okay, fine. 8LQI. This is very important. बाकी सब formulas और दिस इज अ बेसिक डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला, ये तुमको याद रखना पड़ता है। अगर याद रहे तो यू कैन डू दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। प्लीज डेली रिवाइज फॉर्मूलाज। तो व्हाट इज थीटा सर? देन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन, अगर यहाँ पे देख लो ये डाइपोल मोमेंट P1 है और दिस इज आर, ये जो एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड दिस पोजीशन वेक्टर, इसको यहाँ पे हम थीटा बोलते हैं। और इसके यहाँ पे क्यों ले रहे हैं आप इसको, डाइपोल मोमेंट, सेकंड डाइपोल मोमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट, ये जो एंगल है ना, दिस एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन डाइपोल एंड पोजीशन वेक्टर, इसलिए cos फाइव। सोल्व करेंगे इसको, K2L cos 60 1/2 cos 120 minus 1/2, or next step, so let me solve it, minus 1/2। so ये हुआ हमें 2, यहाँ पे हमें 4 मिलेगा, 4 minus 3KQ L by R square। K का वैल्यू कितना है 3 इंटू, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻9 Q L by R square। तो कुल मिला के पोटेंशियल कितना हो यहाँ पे 27 Q R square इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे हम अल्फा अल्फा का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो द वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी 27। दिस विल बी योर आंसर। बिना इस फॉर्मूले के हम कुछ नहीं कर सकते। और सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ऑन द एक्सिस फॉर्मूला K2KB बाई स्क्वायर, और इसको हम बाइसेक्टर बोलते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला कितना कितना होगा KP बाई वाई स्क्वायर। ओके,
फाइन। और सर लगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पॉइंट पी पे इसके लिए फॉर्मूला होगा के पी बाय आर क्यूब 3 cos square theta plus 1 आर थीटा थीटा दिस वन फिनिश होगी। दिस आर द बेसिक आइडियाज ऑफ डाइपोल। और टॉर्क इक्वल टू पी बार क्रॉस सी बार। अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल फील्ड में रहे तो उसका टॉर्क कितना है, उसका इंट्रैक्शन पोटेंशियल जी कितना है। ऑल दीज आर बेसिक आइडियाज ऑफ डाइपोल। प्लीज रिवाइज once again and just remember the basic formulas and practice some previous year questions based on dipole. We'll take the next question. This is the between two pointers the Q1 Q2 placed in vacuum at R center practice what is the हमें दो पॉइंट चार्जेस हैं इसको स्पेस में रखते हैं Q1 Q2 इसका डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है यहाँ पे, और यहाँ पे द फोर्स अगर अनलाइक चार्जेस रहे तो द फोर्स विल बी रिपल्सिव, लाइक चार्जेस रहे तो फोर्स विल बी रिपल्सिव, अनलाइक बोले तो अट्रैक्टिव। देन फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस्ड इन मीडियम हैविंग डायइलेक्ट्रिक एट r/5। तो यहाँ पे हम एक मीडियम लेके आएंगे। पहले ये वैक्यूम में थे r/5, इसका डिस्टेंस भी कम कर देंगे और ये जो सेपरेशन है Q1 Q2 इसका सेपरेशन हुआ r/5। अब इसका वैल्यू पूछ रहे हैं एफ डैश, इसका हम फाइंड आउट करेंगे। ये जो मीडियम हुआ k इक्वल टू 5 डायइलेक्ट्रिक मीडियम। एग्जाम में सब डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी नहीं है, हाँ, यू हैव टू इमेजिन। ये सब आपको इमेजिन करके ये इक्वेशंस लिखना पड़ता है, यू कांट ड्रॉ डायग्राम। और ये पहले सेक्शन में ये दो चार्जेस वैल्यू वैक्यूम, इसका जो चार्जेस है, ये जो चार्जेस है they will find what is the Coulomb's law, F equal to K Q1 Q2 के बदले हम ये लिख देंगे 4 pi epsilon naught r square F dash when in vacuum। जब ये चार्जेस मीडियम में है Q1 Q2 4 pi epsilon naught, इसका सेपरेशन कितना है r/5। जब ये वैक्यूम में थे द सेपरेशन वाज r, जब ये मीडियम में सेपरेशन कितना है r/5, तो इसका r/5 वैल्यू रख देंगे। बाद में इसका मीडियम का वैल्यू कितना है डायइलेक्ट्रिक मीडियम की Q1 Q2 4 pi epsilon naught r square। के का वैल्यू है 5 और ए है 25। F by 25/5 कम आंसर हुआ हमारा 5। जस्ट बेसिक Coulomb's law सर, what do you mean by dielectric? मेरे भाई dielectric is also called as relative permittivity। इसका हर अलग नाम होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डायलेक्ट्रिक और रिलेटिव परमिटिविटी। usually represent like something very simple, Coulomb's law, basic Coulomb's law. Means the Coulomb force depends also on the medium. This is a basic idea.
Coulomb's force also depends on, this is the idea of the problem. So we'll take the next question. So I have the, यहाँ पे two charges है, two charges Q and 3Q are separated by distance r in air. With a distance x from charge Q, the resultant electric field is zero, the value of x. यहाँ पे हम दो चार्ज ले लेंगे, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, Q सेपरेशन कितना है यहाँ पे r. Resultant electric field is zero, the value of x is distance x. यहाँ पे ले लेंगे point P, distance is x. और टोटल डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन चार्जेस कितने r. इसका हम 1 या 2 इंडिकेट कर देंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से इट विल बी E1. इस पॉइंट चार्ज की वजह से इट विल बी E2. इस पॉइंट चार्ज की वजह से विल बी E2. यहाँ पे जीरो बोल रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द नेट फील्ड. नेट फील्ड शुड बी जीरो. नेट फील्ड इज इक्वल टू E1 बार प्लस E2 बार. इट हैज बिकम जीरो. कितना हुआ, k q x स्क्वायर. E2 का वैल्यू कितना है, k 3q r माइनस एक्स होल स्क्वायर. इसका वेक्टर साइन दे देंगे, माइनस आई कैप. सो q बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 बाय r माइनस एक्स होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई करेंगे, r माइनस एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3rx. तो ये वो r स्क्वायर 3rx इक्वल टू 2x स्क्वायर. क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे. 2x स्क्वायर प्लस 3rx माइनस r स्क्वायर. x का वैल्यू x स्क्वायर माइनस 3r प्लस और माइनस 9r स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 8r स्क्वायर. r माइनस एक्स होल स्क्वायर. इसका तो 2rx हुआ ना. इसका वैल्यू 2r, ये हुआ 4r. x वैल्यू minus 2r plus r will be root 12. Root 12 we can write it as 2 root 3 और इसका 4. x equal to r, एक 2 कैंसिल हो जाता है, r प्लस और माइनस रूट 3 माइनस 1 बाई 2. नेगेटिव तो नहीं होगा, ये रूट 3 माइनस 1 ले लेंगे आंसर. माइनस 1 बाई 2. value of x okay then इसका multiply बाकी सब मैथमेटिक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे. रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 बाई 2 रूट 3 प्लस 1. तो ये वो
r by √3 + 1. यहाँ तक तो आंसर है, बट he has taken the conjugator, so we'll divide and multiply. इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर √3 + 1 से डिवाइड कर लेंगे. तो √3 - 1, √3 square - 1 square will be 3 square - 1 square will be 3 - 1 2. A2 न्यूमरेटर में जो 2 और डिनोमिनेटर 2 कैंसिल होके हमें आंसर यहाँ तक सिंप्लीफाई होके ये आ रहा है हमें. Okay, this will pick up this option. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? इट्स लाइक ए सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी ओनली. जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, वहां पे आपको क्या है कि एनर्जी रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी रहता है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी वी आर एक्सप्रेसिंग यूजिंग दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. Identical charge spheres are suspended by string of equal length. The strings makes an angle with each other. When suspended in liquid of density, the angle remains same if the density of material of the sphere. तो आप यहाँ पे हमें दो चार्जेस स्पीयर्स ले लेंगे. टू आइडेंटिकल चार्ज स्पीयर्स. वी आर सस्पेंडेड. इसको हम यहाँ पे सस्पेंड करेंगे. दे आर इन एयर. टेंशन T1, T भी लिख सकते हैं. द डेंसिटी ऑफ मटेरियल पहले आर सस्पेंडेड, पहले एयर में है. दे आर इन एयर. यहाँ पे मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, दिस एवरीथिंग इज इन एयर. दिस द कंडीशन. उसका एंगल स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद ईच अदर. ये जो एंगल है 37, तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री. और कौन सा फोर्स वेट है? दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू इसका वैल्यू और थीटा, इसका वैल्यू और थीटा. सो T sin थीटा इक्वल टू F. इसको जो टेंशन है इसका रिजोल्व कर देंगे. टेंशन शुड एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी. इसका ऑर्जेंटल कंपोनेंट कितना हुआ? T sin थीटा. और T sin थीटा नाउ विल बैलेंस F. इसका ऑर्जेंटल कंपोनेंट कितना हुआ? T sin थीटा. दिस विल बैलेंस F. इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हुआ? T cos थीटा. ये जो T cos थीटा है इट विल बैलेंस mg. या T cos थीटा हियर विल बैलेंस mg. लिख देंगे. नो, यहाँ पे T cos थीटा विल बैलेंस mg. बल्कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम है. डिवाइड दिस टू, हमें यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा. नाउ ये जो दोनों पेंडुलम्स है ना, ये दोनों पेंडुलम्स और दोनों स्पीयर्स को लिक्विड में डुबा देंगे और लिक्विड में इमर्स कर देंगे. व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड मींस लिक्विड में है. सॉरी, लिक्विड में इमर्स कर देंगे. सस्पेंडेड, इसका मीनिंग थोड़ा बहुत वही चार्ज स्पीयर्स को विल सस्पेंड इन द लिक्विड. एनी कंडीशंस में, एनी कंडीशंस के बाद कंडीशंस कहते हैं कि जो एंगल है बिटवीन द स्ट्रिंग्स वो कांस्टेंट रहता है. जो एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स है दैट विल रिमेन कांस्टेंट. दिस ए एंगल चेंज नहीं होता है. देन कौन से फोर्सेस यहाँ पे ऐड करते हैं हम? एम जी.
एम एम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाउ चेंज होता है। क्यों क्यों ये चेंज होता है कि इसका जो मीडियम है ना, दिस इज द लिक्विड है, यहाँ पे हम येलो कलर, दिस एवरीथिंग इज लिक्विड। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहे हैं, एप्सिलॉन आर, और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही है। देन कौन से फोर्सेस ऐड करेंगे अब? टेंशन टी डैश, टेंशन थोड़ा चेंज हो जाता है, और इसके अलावा बाइंड फोर्स। हाँ, बाइंड फोर्स सर किस लिए बाइंड फोर्स? बाइंड फोर्स जो now the spheres are there, now they are immersed in liquid, so definitely upward thrust of bind force will be acting with the bind force. Potential flow different because it is immersed in liquid, so definitely, and then the electrostatic force also will change. Theta remains same, so the tension has to change. Now it's the equation, the effective weight. So we'll write like this. This angle will be theta, here angle over theta. So T dash sine theta minus Fe dash equal to 0. T dash cos theta mg minus Fb, इस तरह हम लिखेंगे, और Fb माइनस एम जी इक्वल 0। इस इक्वेशन को दोबारा थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ये हुआ mg minus Fb. This equation T dash sin theta equal to Fe. इस दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, देन अगेन tan theta इक्वल टू mg minus Fb by Fe dash. Now ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे। इक्वेट करने पर हमें यहाँ पे Fb by tan theta वैल्यू Fe dash by mg। Fe का वैल्यू कितना है? Q1 Q2 आइडेंटिकल, Q स्क्वायर चार्जेस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो डिस्टेंस है दिस विल रिमेन सेम, ये तो चेंज नहीं होता है। एक्स स्क्वायर एम जी क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये जो मीडियम है इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही तो हमको फाइंड आउट करना है। तो द इफेक्ट ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर, देन दिस एक्स स्क्वायर एम जी माइनस एफ बी। यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एप्सिलॉन आर वैल्यू हुआ mg by mg minus band force, m was density of the sphere, volume of sphere, g density of sphere, volume of sphere, band force was density of liquid, volume of the sphere into g. Okay, this will be like this. Next value subtract करेंगे, density of liquid, density of liquid 0.7 है, density of sphere 1.4 है। Okay, इसका 1.4 the value of this is our answer. Okay, बच्चों, like
तुमको थोड़ा बहुत बायोन्सी का व्हाट इज द बायोन्सी फॉर्मूला? सो डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी, दिस द मिनिमम बेसिक कॉन्सेप्ट बायोन्सी के बारे में। थोड़ा बहुत तो आपको फॉर्मूला फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू जी, बाकी सब भी आई थिंक पता है। जैसे थोड़ा बायोन्सी का यहाँ पे थोड़ा आइडिया अगर है तो इट बी वेरी इजी फॉर यू। और इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपवर्ड थ्रस्ट। तो इसका सर व्हाट इज दिस एक्चुअली? इसको बायोन्स बायोन particle of charge minus 2 in mass moves in a circle of radius are around infinitely long line charge. The time period will be given by, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं। So we'll consider one long line charge. यहाँ पे लॉन्ग लाइन चार्ज, चार्जेस कितना है? पॉजिटिवली चार्ज, और इसका चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, एक घूम रहा है हा? किसके ऊपर से नहीं, वी हैव टू से बिसाइड। ये जो पॉइंट चार्ज है, नो नो, रॉड के तरफ से घूम रहा है सर्कुलर पाथ। तो इसका रेडियस और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉइंट चार्ज लाइन चार्ज। अगर एक जो लाइन चार्ज, इसका lines of force will be radially outward. There's a minimum idea अगर आपको रहे तो it will be easier. Then बाद में सर व्हाट इज दिस? ये तो लाइन चार्ज हुआ, इसका टॉप व्यू मैं दिखा रहा हूँ। तो जो फील्ड प्रोड्यूस करता है लाइन चार्ज, इट विल बी रेडियली आउटवर्ड, बी रेडियली आउटवर्ड लाइक दिस ए प्लेन डायग्राम, दिस ए टॉप व्यू डायग्राम। ये जो है ना, दिस विल बी ए टॉप व्यू डायग्राम। देन इसका वैल्यू कितना है? ई लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो व्हाट इज आर? आर इज दिस वन। तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन हो गया रेडियली आउटवर्ड, एंड यहाँ पे जो फोर्स है, दिस फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। So this will be Fe equal to Q into E. And जो force I know, this is surrounding line charges के घूम रहा है। That is responsible for circular motion. तो यहाँ पे centripetal force, who is providing? कौन centripetal force provide कर रहा है? जो ये electrostatic attractive force यहाँ पे जो है, इसकी वजह से और ये tangential velocity की वजह से, it will move in a curved path. This is one basic idea. अगर आपको फिर थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है बोले तो देन यू गो फॉर प्लेन डायग्राम। यहाँ पे ये जो लाइन चार्ज है, जैसे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इस तरफ एक्ट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और वेलोसिटी। सो हाउ इट इज इन सर्कुलर पाथ? ये दोनों की वजह से, बिकॉज ऑफ ए इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द टेंजेंशियल वेलोसिटी, इट विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ। अगर ये जो वेलोसिटी नहीं रहे तो ये पॉइंट चार्ज है ना, ये लाइन चार्ज के तरफ दौड़ के चला जाता है। अगर ये लाइन चार्ज नहीं रहे तो
ये टेंजेंशियल वेलोसिटी वजह से ये सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता है, सीधा सीधा ये इस तरफ चले जाता है। तो सर्कुलर पाथ के लिए क्या क्या नेसेसरी, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, और टेंजेंशियल वेलोसिटी, अगर ये दोनों है तो देन नो दे कैन मूव इन सर्कुलर पाथ। सो हाउ कम्स लाइक फोर्स एंड वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल का बेसिक लेवल, अगर प्रोजेक्टाइल, अगर आप वेलोसिटी दे रहे हो और वेट एक्टिव, तो कैसे प्रोजेक्टाइल मूव होता है, इट कैन मूव लाइक दिस। ये तो सभी प्रैक्टिकल सभी को पता है। अगर ये पत्थर पे एक दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो पत्थर है, ये क्यों सीधा वर्टिकली क्यों नहीं मूव नहीं हो रहा है, और हॉरिजॉन्टली क्यों मूव नहीं हो रहा है, ये ऐसे लेके कर्व्ड पाथ में क्यों मूव हो रहा है, बिकॉज ऑफ वेट एंड वेलोसिटी। यहाँ जो वेट एंड वेलोसिटी दोनों की वजह से इट इज मूविंग इन कर्व्ड पाथ। द सेम आइडिया व्हाई ए सर्कुलर पाथ में क्यों घूम रहा है, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी। दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, एनी फोर्स, कौन सा तो फोर्स ये प्रोवाइड कर सकता है। अगर ए नॉर्मल कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन, वेट, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, एनी फोर्स कैन प्रोवाइड दिस, फाइन। नो, दिस पर्टिकुलर फोर्स will provide required centripetal force। और सेंटीमीटर का फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर है। एफ ई का वैल्यू पता है हमें, यहाँ पे लगा देंगे क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या पूछा है, टाइम पीरियड, सो इंस्टेड ऑफ वी वी यूज ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज वी इक्वल टू अगेन आर ओमेगा। सर हम ओमेगा का डायरेक्शन हम दिखा सकते हैं आपको, ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ पे सेंस ऑफ रोटेशन, एक्चुअली वो इस तरफ रहता है ओमेगा, दिस इज सेंस ऑफ रोटेशन। नो, इसका क्यू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा विल बिकम 2 पाई बाई टी। यहाँ पे टाइम पे विल बिकम 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एम बाई क्यू लैम्डा। 2 पाई आर विल टेक आउटसाइड, 2 पाई आर अगर बाहर निकले तो एम एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू लैम्डा। इसका एप्सिलॉन नॉट एडजस्ट कर सकते हैं हम, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका 4 पाई आर एम एप्सिलॉन नॉट क्यू लैम्डा, एप्सिलॉन का वैल्यू वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ के। ओके बच्चों, तो आपको ये सब याद रहना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, अगर ये डायग्राम, ये फॉर्मूला आपको पता है तो देन यू कैन मैनेज दिस। एंड थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाई आर। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। ये सिंपल डाइपोल के बारे में पूछ रहे हैं। डाइपोल, डाइपोल में दो पॉइंट चार्ज रहते हैं, एक नेगेटिव देन दूसरा वाला पॉजिटिव, एट ए डिस्टेंस आर। इसका यहाँ पे आपको पोटेंशियल पूछ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट 2L3। So what is the dipole moment? अगर what is the actually sir a negative positive charge? This particular dipole moment is used more in the electrochemistry. When the material gets polarized, the atom only will behave like a electron. Atom only
दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो मटेरियल पोलराइज हो सकता है, अगर कोई मटेरियल जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वजह से द चार्ज, नेगेटिव चार्ज विल गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके वजह से क्या है कि लगे दिस विल बिकम इलेक्ट्रिक डायपोल। फिनिश श्योर। सो एटम्स ही इलेक्ट्रिक डायपोल है, हर एक एटम इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं। तो जिसका सब्सटेंस पोलराइज होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तुम, देन दैट पर्टिकुलर एटम विल बिकम डायपोल। सो इसलिए डिस्टेंस जो है नो, सो दिस विल बी एल विल बी वेरी मच लेस देन आर, बिकॉज व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड रिवॉल्विंग चार्ज, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, ये तो बहुत कम होगा। So that's why L will be always less than capital R. R बोले तो it a distance R outside the atom. यहाँ पे पोटेंशियल पूछ रहे हैं, तो what is the potential formula? K P cos theta, आपको याद रखना पड़ता है इसको। We can derive, but directly formula is available. Sir, what is the K? 1 by 4 pi epsilon naught. What is theta? So theta क्या है यहाँ पे? Angle between R bar and P bar. P bar direction will be from negative to positive charge. तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहता है। सो व्हाट इज द पैरेलल कंपोनेंट? पैरेलल कंपोनेंट इज गिवन बाय 2kp sin theta by r cube. E perpendicular will be kp cos theta by r cube. अगर यहाँ पे नेट फील्ड पूछे तो इसका वेक्टर सम ले लो। ये सब थ्योरी है इलेक्ट्रिक डायपोल, जाके पढ़ो, एक 10 मिनट में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। नॉट वेरी बिग, जस्ट ओनली 10 मिनट्स। ये फॉर्मूला याद रख लो। सो दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बिकम kp r क्यूब रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। cos थीटा cos थीटा ये हुआ sin थीटा पैरेलल कंपोनेंट। सो ये जो फॉर्मूला दे रहा हूँ, दिस इज द नेट फील्ड। नेट फील्ड एट a point A at a distance r from the dipole, where the dipole will make an angle theta with a position vector with the basic formula. इसको याद रख लो बस, इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट गॉस लॉ। Electric field is given by electric field through a surface lying in yz plane. Definition flux equal to E bar dot S bar. E bar vector 6i cap 5j cap 3k cap dot area vector हुआ 30i cap I dot I1 I dot G dot I0 I dot I value कितना I dot I1 J dot I value 0 K dot I0, so total value 6 into 30। ऐसा यूनिट, इसका यूनिट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर कूलम पर मीटर। 180 इसका फ्लक्स।
सर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? ये थोड़ा लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में इंफॉर्म देता है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव रहे तो द फील्ड इज कमिंग अवे फ्रॉम द सरफेस। अगर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव रहे तो द फील्ड इज एंटरिंग द सरफेस। दिस इज वन थिंग, सो इट विल गिव द डायरेक्शन। फ्लक्स पॉजिटिव बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एमर्जिंग थ्रू ए सरफेस। अगर इसका फ्लक्स नेगेटिव रहे तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एंटरिंग ए सरफेस। सो जो फ्लक्स है, पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, इट विल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन हमको देता है। देन उसके बाद इट विल गिव अस द लाइंस ऑफ फोर्स, बिकॉज लाइंस ऑफ फोर्स तो वो इमेजिनरी हम ड्रॉ कर रहे हैं। So, कितना है लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड टेन वोल्ट के लिए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 वोल्ट पर मीटर, और एक वही रीजन में दूसरा फील्ड लेके आता हूँ, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कितना है 30 वोल्ट है। तो 10 वोल्ट के लिए कितना लाइंस ऑफ फोर्स मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? 30 वोल्ट के लिए कितना लाइंस ऑफ फोर्स हमें ड्रॉ करना पड़ता है? अगर आप 10 वोल्ट के लिए अगर आप 10 से लेकर 100 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, 30 वोल्ट पर मीटर के लिए आपको 300 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना पड़ता है। इसके लिए 10 के लिए अगर आप से लेके विल डू वन थिंग। 10 के लिए सर मैं 20 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। 30 के लिए कितना, तुम 60 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना पड़ता है आपको। फाइन। तो दिस आर द लाइक सर, लाइक दूसरा स्टूडेंट सर लाइक वो 200 कर रहा है और 30 के लिए 600, वो भी सही है। यस। सो टू मेक इट यूनिफॉर्म थिंकिंग, दैट्स व्हाई वी ब्रॉट द आइडिया ऑफ फ्लक्स। बट इट शुड बी रेशियो। अगर 10 के लिए आप 20 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करे बोले तो 30 वोल्ट पर मीटर के लिए आपको 60 लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करना पड़ता है। तो टू हैव द यूनिफॉर्म थिंकिंग, दैट्स व्हाई वी ब्रॉट द आइडिया ऑफ ए फ्लक्स। अगर फ्लक्स ज्यादा है तो गिवन सरफेस द ई इज मोर, अगर फ्लक्स कम है तो ई इज लेस। So like this now, a better way of studying the electric field through the flux than through lines of force. That is the basic idea of which one. इससे आप ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। Electron is moving under the influence of the electric field of a uniformly charged infinite plane sheet having surface. The electron at t equals 0 at distance 1 meter from S and has a speed of 1 meter. The maximum value of sigma if the electron strikes S at t equal to अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। एक इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, यहाँ पे हम चार्ज शीट ले लेंगे अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है यहाँ पे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? द चार्ज शीट। इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये जो इनफाइनाइट है, मैं फाइनाइट दिखा रहा हूँ। चार्ज शीट having surface charge density plus sigma. So conducting या non conducting, अगर conducting है तो you have mentioned the charge conducting plane sheet, infinite plane sheet. So this will be non conducting sheet. So इसका वैल्यू कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन एज्यूम कर लेंगे। कितना डिस्टेंस में, कितना दूरी में है? 1 मीटर फ्रॉम शीट। एंड इसका स्पीड कितना है? इलेक्ट्रॉन का स्पीड इनिशियली v नॉट बोलेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा इफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स s at t equal to 1 second. t equal to 0, द इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है।
देन 1 सेकेंड के बाद यही इलेक्ट्रॉन है ना, सो इट विल कम एंड स्ट्राइक दिस, आके इस शीट को टच करता है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा इफ द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स एस एट इक्वल टू 1 सेकेंड. 1 सेकेंड होने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आके शीट को टक्कर मारता है, इसको कोलिजन बोलते हैं. एक्सप्लोजन करता है. इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, तो ये तो रिटार्डेशन होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई टुवर्ड्स राइट. सो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो एक्ट हो रहा है बी टुवर्ड्स राइट, सो ये रिटार्डेशन हो जाता है. तो कितना टाइम लेता है? सो इट विल टेक द 1 सेकेंड एंड एक डिस्टेंस भी दे चुके हैं. सो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी va माइनस a इंटू टी. इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर. यहाँ पे लगा दो. एक्सल रिटार्डेशन क्यू ई बाई एम. टाइम कितना दिया? 1 सेकेंड. और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ई सो भी पूछ रहे हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्मा, देन क्यू ई बाई एम शुड बी इक्वल टू 1. ई का वैल्यू कितना हुआ? एम बाई क्यू. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सिग्मा इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा का वैल्यू कितना हुआ? 2 एप्सिलॉन नॉट. ओके फाइन. सो इसका हुआ 2 Coulomb per meter. This will be Coulomb per meter square. हाफ ए टी स्क्वायर वो भी कौन सा भी नहीं. द फॉर्मूला विल बी सेम. अगर अगर आप x इक्वल टू द वैल्यू विल बी सेम 1 सेकेंड. 1 सेकेंड इज अल्फा m f not 2, so alpha will be 2. So the misprint answer will be 2. The value of alpha पूछ रहे हैं. सर व्हाट इज यहाँ पे सिग्मा? सिग्मा बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी. आप ई को यहाँ पे सिग्मा 2s क्यों बोलते हैं? वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट. इसका बेसिक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो दिस प्रॉब्लम इज वेरी इजी. और आपको टू गॉस यू हैव टू डिराइव इट. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्मली चार्ज शीट? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. टू कंडक्टिंग शीट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. दूसरा प्रॉब्लम ले लेंगे. Like we have to match the list. There's a basic, ये तो आपको पता है. दिस इज द फैराडेस लॉ, सॉरी गॉस लॉ. गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी. तो सी का ऑप्शन है 1. देन ये तो मैक्सवेल्स एम्पियर्स मैक्सवेल्स लॉ, मैक्सवेल्स इक्वेशन में इसको हम कंडक्शन बोलते हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डीएल. सो ए का वैल्यू हुआ 4. DL है, not DI, DL. So this is the Faraday's law. EMI chapter, electromagnetic induction. This is EM waves. Chapter, this is electromagnetic induction. And this is Gauss law. A Gauss law for magnetism.
ये electromagnetic induction chapter है, this is EM waves chapter है, and this is the magnetism chapter. So then we'll match it. So B over Faraday's law, D over Gauss law for magnetism. Just definition. In detail in that particular chapter I'll be explaining. हम दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे. Two charges phi q minus 2q are situated the electric flux through a sphere of radius 4a having center at origin. तो पहले हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे. पॉइंट 3 इसका स्फीयर का रेडियस कितना है इंडिकेट कर लेंगे हम. इसका स्फीयर का रेडियस हुआ इसका 4 है और 3a,0 यहाँ पे आपको एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा चार्ज कहाँ पे है -5a,0 -5a,0 बोले तो ए नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट पे ये जो चार्जेस हुआ IQ -2q का चार्ज कितना है -2q. इसका डिस्टेंस ए जो 4a है दिस डिस्टेंस इज कितना हुआ ए वाला तो स्फीयर है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहे हैं. व्हाट मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू a sphere so the net flux should be equal to q in by epsilon naught. तो स्फीयर जो चार्ज एनक्लोज है उसी की वजह से फ्लक्स रहेगा. So this will be 5q by epsilon naught. Sir, what is the meaning? Like हम बहुत पढ़े हैं सर. लाइक सभी लेक्चर्स बोलते q in by epsilon naught. जो चार्ज अंदर है उसी की वजह से नेट फ्लक्स है. So उसका मीनिंग क्या है सर? लगे what is the meaning of that? हम यहाँ पे ले लेंगे. हम दूसरा कलर्स ले लेंगे. इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ कर लेंगे. दिस इज 5q. ओके फाइन. और इसका जो लाइन्स ऑफ फोर्स माइनस इसका और इसका कितना 1 2 3 लाइन्स. रफ डायग्राम यहाँ पे काउंट करेंगे कितना लाइन्स हम 5 के लिए कितना ड्रॉ करें. 5
कितना काउंट करेंगे, 5 5 8 9 10 11 12 15 लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करेंगे। कितना होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 लाइन्स ऑफ, वहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है और 1 लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे लगा देंगे। तो फॉर 5 क्यू चार्ज 15 लाइन्स, तो माइनस 2 क्यू के लिए रेशियो, द रेशियो शुड बी सेम फॉर 5Q के लिए हम 15 ड्रॉ कर रहे हैं। 2Q के लिए कितना लाइन्स, तो दिस विल बी 15 इंटू 2Q बाय 5Q। 6 लाइन्स ऑफ फोर्स हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है। ये जो मैं हटा देता हूँ थोड़ा, लेट मी री ड्रॉ इट। सो कितने हुआ, 6 लाइन्स ऑफ फोर्स, उसमें से एक लाइन्स ऑफ फोर्स एक यहाँ पे 2, अभी 2, अगर आप यहाँ पे देख लो तो ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, these are coming out, net flux will be generated। इसका जो लाइन्स ऑफ फोर्स है, these are what will come like this। इसे ड्रॉ करता हूँ तो 1 2 3 4 5। नेट लाइन्स ऑफ फोर्स देख लो, these are all, these lines of force यहाँ पे ले लो, they are coming out of the sphere। इसका जो lines of force है, this will enter and will leave। इसका जो lines of force है, this will enter and it will leave, terminate, this will enter and leave, this is not at all entering, that's why the net flux will be 0। ये जितना भी लाइन्स ऑफ फोर्स -2Q चार्ज जो प्रोड्यूस कर रहा है, इसका लाइन्स ऑफ फोर्स एंटर होके फिर बाहर निकलता है। और 5Q का चार्ज वैसा नहीं है, जो भी लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है, दे ऑल विल कम आउट ऑफ द स्फीयर। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि नेट फ्लक्स इज ड्यू टू ओनली 5Q चार्ज। मीनिंग ऑफ दिस, अगर तुम लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ करें तो तभी आपको इसका मतलब पता होता है कि व्हाट मीन बाय नेट चार्ज एक्रोस। तो जो चार्ज अंदर है वही नेट फील्ड कंट्रीब्यूट, वही नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूट करता है। नेट फ्लक्स वन ऑफ द लाइन्स ऑफ फोर्स। I think in atomic physics के बारे में, so this is the atom। आपको यहाँ पे this atom, the electric potential at surface of an atomic nucleus that is equal to of radius r। So what is the electric potential equal to K Q by r square। Q का वैल्यू कितना, K का वैल्यू 9 into 10 to the power of 9, Q का वैल्यू Z into E by r square। We'll substitute all the values, 9 into 10 to the power of 9, Z का वैल्यू 50, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power of -19, R का वैल्यू 9 into 10 to the power of -13 होल स्क्वायर। तो भी सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर दो। आपको डरने की जरूरत नहीं सर, एटम न्यूक्लियस का उसका चार्ज पॉजिटिव है। पोटेंशियल ऑन द सरफेस पूछ रहे हैं, नॉट आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर। अगर फॉर्मूला जाए तो वेरी इजी। सो चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज Z into E। थोड़ा
idea of the atomic is rest of the electrostatic for charges K or the formula PQ. Simple idea based. दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे. यहाँ पे दो चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज है. इस पॉइंट के यहाँ पे रख चुके हैं. इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल. पहले हम डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करेंगे. इसका डाइपोल मोमेंट, सो वी नीड टू फाइंड आउट द सेपरेशन बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. अगर वो जो सेपरेशन वैल्यू होता है तो देन विद दैट वी कैन कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट. पी बार वेक्टर चाहिए हमें. So P bar will be directed from negative to point charge. So therefore the value, the P bar vector will be AB bar into Q. Q is अगर आप minus Q ले सकते हैं या plus Q. AB bar vector 2 minus 1 like that. Position vector plus minus 1 minus 0 J cap. 5 minus 4 K cap. इनका चार्ज का वैल्यू कितना 4 into 10 power of minus 6. This will be I cap minus J cap plus K cap. ये हुआ इसका डाइपोल मोमेंट. इसको हम दिस विल बी कूलम्ब मीटर. इसको हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डाइपोल? टॉर्क इक्वल टू पी बार क्रॉस सी बार. पी बार का वैल्यू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ई बार का वैल्यू 0.2 आई कैप. I cross I 0, J cross I cross J K, J cross I minus K. So this will become plus 0.2 K. K cross I will be J, 0.2 J cap. Into 4444 calculation. तो इसका टोटल 4 into 10 to power of minus 6. So this will become 0.8 J cap, 0.8 K cap into 10 to power of minus 6. मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क पूछ रहे. इसका मैग्नीट्यूड हुआ 0.8 होल स्क्वायर तो 0.8 रूट 2. सो इसका टोटल मैग्नीट्यूड 8 into 10 to power of minus 5 रूट 2 और 8 रूट 2 into 10 to power of minus 5 न्यूटन मीटर. इसका वैल्यू 2. ओके सर फाइन. आप ये जो फॉर्मूला है आप कैसे लिख रहे हैं? डिस्टेंस से भी अगर आपको ए एंड बी का कोऑर्डिनेट्स पता है तो डिस्टेंस ए बी कितना. ओके सर लाइक हाउ टू इमेजिन दिस. तो आप एक काम कर सकते हैं लाइक स्मॉल बेसिक इमेजिनेशन. इन स्पेस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. दिस डिस्टेंस इज ए, दिस इज बी. इसका डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? आर ए बार बेसिक वेक्टर अलजेब्रा आर बी बार. Then RB bar minus RA bar is what the distance AB bar, no?
ये वेक्टर यहाँ पे लगा देंगे एंड ए तो डाइपोल होता है ना. व्हाट इज अ डाइपोल? डाइपोल मोमेंट हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ए बी इंटू क्यू. What is the relation between the charges? The dipole moment is directed from negative to positive point. Simple definition. आप आपका टीचर नोट्स ले लीजिए, जरूर आपको बेसिक आइडिया वहां पे देता है एंड दिस फॉर्मूला आपका टीचर डिराइव करके वहां पे नोट्स में रहता है. अगर आप टीचर नोट्स रिवाइज करेंगे डेफिनेटली आपको ये सब इंफॉर्मेशन वहां पे रहता है एंड आप जब पढ़ते हैं ना, बार बार पढ़ते हैं, ये सब याद हो जाता है. देन आप जब PYQ कर रहे हो इमिट डाइपोल, ये फॉर्मूला अगर याद रहे तो, अगर ये थोड़ा कॉन्सेप्ट याद रहे तो दिस क्वेश्चन वेरी इजीली यू कैन सॉल्व. बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप ब्लाइंड फॉर्मूलाज मैनेज नहीं कर सकते. एग्रीड? तो अगला क्वेश्चन दे देंगे. पहला assertion reason, work done by electric field and moving a positive charge on equivalence is always zero. Electric line force always perpendicular to equipotential space. I think there's a basic concept. Work done. What is the formula for work done? Work done in moving a charge from A to B by electrostatic force equal to Q into A minus B. Equipotential. बोले तो VA equal to VB. अगर VA equal to VB बोले तो then the vessel becomes zero. तो work done कितना होगा? Zero. Option A is correct. Assertion is correct. Then electric lines of force are always perpendicular to equipotential surface. Yes, it must be. There's one basic rule. अगर सर perpendicular नहीं रहे तो क्या होगा? It will violate law of conservation of energy principle. If E bar is not perpendicular to equipotential space, it violates law of conservation of energy. If law of conservation of energy gets violated, then it's not physics. These are fundamental. Both are correct. And reason is a correct expression. So how you justify this? What is the equipotential surface? Two points are at same potential. And again, what is the condition? The A1 must be perpendicular. If two points are at same potential, then only E bar will be perpendicular. Agar this is the thing. If E bar like this, A bar, agar E bar to some direction, then definitely open due to E cos theta, VA will become greater than VB. Then not become equipotential. Agree this. If E bar is perpendicular to the equipotential surface, then what happen? VA, VB will be at same potential. If E bar is not perpendicular, what will happen? Then component of E cos theta will come. Due to E cos theta, again VA greater than VB, they'll not be equipotential. Fine. I think explanation ले लेंगे. Not option 1, in fact option 4. Next अगला क्वेश्चन ले लेंगे. यहाँ पे हमें
में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग, पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अनदर पॉइंट चार्ज यहाँ पे सेंटर पे हम रख रहे हैं, क्यू चार्ज, टू पाई कूलम। इसका टोटल चार्ज 2 पाई कूलम है। Then this is all. Please, we have to calculate the tension in the ring. यहाँ पे हम एक एलिमेंट चूज करेंगे। फाइन, तो इस एलिमेंट रिंग का ही एक थोड़ा छोटा सा हिस्सा हम पार्ट ले लेंगे। इस छोटे से पार्ट में भी चार्ज रहता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, एक जो टोटल रिंग है पॉजिटिव चार्ज, सो हाउ द रिपल्सिव फोर्स इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्सिव फोर्स द रिंग स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। दिस इज बेसिक आइडिया, एक जो रिंग है because of repulsive force. So why this repulsive force? अंदर यहाँ पे आपको positive charge है. What is the charge of ring? Charge of ring is also positive. So total repulsive force हर तरफ रिंग को ऐड करता है। So इसके वजह से क्या है कि रिंग will get now a tendency to expand. Then it start expanding. Then ये expansion रुकने के लिए, then as this having elasticity, so therefore it will bring a deforming, restoring force. The restoring forces is nothing but what we'll show, we'll call them as tension. I think this is a basic concept, not something very new. Already at many places you might have come across. Some mathematics will assume this is the theta. Phi will assume. Theta again will get confused with the charge. ये जो angle हुआ phi. Everyone maths okay, no problem. ए होगा रेडियस, इसका चार्ज कितना है q चार्ज, और इसका एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट जो आप कंसीडर कर रहे हैं, तो दिस इज सेकंड एंगल फाई, इसका रेडियस हुआ r, इसका लेंथ हुआ डेल्टा l। And the tension should act tangentially. There's one property of tension. टेंशन जो भी है वो इट विल एक्ट टैंजेंशियली। यहाँ पे हम एट इक्विलिब्रियम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय 2 sin phi। इसका कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स इस तरफ आता है। I'll explain through diagram. इसका कंपोनेंट अगर आप रिजॉल्व करें तो t sin थीटा, और अगला कंपोनेंट होगा t cos phi। सेम थिंग इसका वन कंपोनेंट, अगर ऑरिजेंटल कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो दिस विल बिकम t cos phi, वर्टिकल कंपोनेंट विल बिकम t sin phi। तो t sin phi ये दोनों ऐड हो जाते हैं। फाइन, तो यहाँ पे हम ले लेंगे t sin थीटा प्लस t sin थीटा, df कितना, यहाँ पे चार्ज कितना है q है, एंड df है चार्ज, यहाँ पे लगा दो k dq q, यहाँ पर q रख देंगे इसको r स्क्वायर, theta very small, sin theta will become theta। स्मॉल q ही रख देंगे। वेट सिंबल्स। ओके फाइन, तो ये जो एंगल है ना फाई है। ओके नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे इसका, कि वैल्यू हुआ, टेंशन के बारे में पूछ रहे हैं, डी क्यू विल बी लैम्डा इनटू डी एल।
और डेल्टा एल। क्यू आर स्क्वायर 2 पाई थीटा। लैम्डा लैम्डा विल बी टोटल चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना है, क्यू क्यू चार्ज है, इसका टोटल चार्ज हम क्यू नॉट ले लेंगे, क्यू नॉट बाई 2 पाई आर। डेल्टा एल वैल्यू आर 2 पाई आर स्क्वायर, क्यू चार्ज 2 पाई के क्यू नॉट क्यू 2 पाई। यहाँ पे देखो के वैल्यू क्यू नॉट क्यू, ये जो 2 पाई है 2 पाई दिस विल कैंसिल आउट। यहाँ पे आपको आर आर स्क्वायर आर है, यहाँ पे आर स्क्वायर विल बी दिस, एल रही राइट, आर स्क्वायर हुआ 2 पाई, के का वैल्यू कितना 1/4 पाई। अगर सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे then we'll get the required answer. Yeah, please solve karo, it's a substitution directly. Let me take the next question. Electric charge is placed at 0, 0 corner 2 points P and Q are situated. Potential difference पूछ रहे हैं यहाँ पे. We'll draw the rectangular coordinate system. ये जो पॉइंट हुआ 3,3 और दूसरा पॉइंट हुआ 6,3. X axis, Y axis. 3,3 पे 3,3 में that is the 1 point. Point 6,0 √6,0 √6,0 तो दिस इज पॉइंट बी, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहे हैं, तो दिस यू कॉल आर ए, ये तो आर बी हुआ, ये तो एक्स एक्सिस हुआ, तो इसका डिस्टेंस कितना है √6, और ए कितना हुआ √3, ये हुआ √6. पोटेंशियल एट पॉइंट ए के क्यू आर ए, potential at point B, K, Q, RB. Potential difference between P and Q, VA minus VB, KQ 1/RA minus 1/RB. RA का वैल्यू कितना है √3². RB का वैल्यू होगा √6. Potential difference will be 0. Simple. Just basic definition. Potential is a scalar quantity. दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे. हमारे पास यहाँ पे एक
Suppose a uniformly charged will produce uniform electric field normally. It will produce an uniform electric field. A charged particle mass 2 is suspended to a cylinder and remains at a distance 10 centimeter from the wall. यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे. क्या होगा कि चार्ज पार्टिकल सस्पेंड करेंगे इसी पोजीशन पे रहेगा. इसका चार्ज पार्टिकल क्यू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ इसका एनर्जी, इसका जो चार्ज है, the charge on the particle will be, इसका चार्ज है, ये जो है ना चार्जड वॉल है, दिस वन. देन इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर. लेंथ कितना है इसका, सो दिस इज एक्स, विल कॉल दिस इज एल. ये जो लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, और जो डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल कितना है 10 सेंटीमीटर. द चार्ज ऑन द पार्टिकल, इसके क्यू के बारे में पूछ रहे हैं. सो विल टेक दिस इज द थीटा. यहाँ पे जो टेंशन, इट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन. तो विल बैलेंस नो, अगर आप देखें तो कंपोनेंट ऑफ टेंशन टी, ये जो कंपोनेंट ऑफ टेंशन टी साइन थीटा ए एम जी को बैलेंस करता है, और दूसरा कंपोनेंट टी कॉस थीटा, दिस विल बैलेंस एफ ई. विल राइट डाउन द इक्वेशन, टी कॉस थीटा विल बैलेंस एफ ई, टी साइन थीटा विल बैलेंस. So then this will be cos theta, tan theta will balance mg by f, mg by q. cos theta का वैल्यू कितना है, x by l, ये हुआ 10/20 1/2. तो थीटा वैल्यू 60 डिग्री. अगर थीटा 60, tan थीटा tan 60 इक्वल टू mg by q, tan 60 √3. m का वैल्यू 2 ग्राम है, इसका हम kg में कन्वर्ट कर देंगे. g वैल्यू 10, चार्ज, okay, this will be 2 into 10 to the power of 4. Everything will solve for q, we'll get the required answer. 1/√3. 1/√3 into 10 to the power of -6 Coulomb. Simple idea, electric field due to the directly. इसके सर, इसके बारे में हमें पता नहीं सर. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, नो नीड, डायरेक्टली इसका वैल्यू दे चुके हैं. अगर आपको सिग्मा फाइंड आउट करना है बोला तो वैल्यू लगाइए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन. चार्ज डेंसिटी वॉल के ऊपर कितना है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ये बॉब का जो चार्ज है कितना है, देन अगर कौन सा भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रहे तो उसका फोर्स कितना होगा, क्यू. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, लेकिन electrostatic force on a point charge which is kept in electric field, means जो चार्ज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखते हैं उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, Q into E. This is a concept. Rest all everything you know. दूसरा प्रॉब्लम ले लेंगे, C1 and C2. यहाँ पे हमें दो क्यूब मिलेंगे, एक बड़ा वाला ब्लू कलर, उसको शेड कर रहा हूं मैं, फाइन, और दूसरा वाला ग्रीन कलर का. तो आई थिंक अब डायग्राम वेरी क्लियर. छोटे वाले क्यूब में कितना चार्ज है, 2 क्यूब. बड़े वाले क्यूब में 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब. So this given C1 as including C1 is green
जो ब्लू कलर का क्यूब है, ये जो ग्रीन कलर का क्यूब में कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है? 2q. Only the charge enclosed will produce net flux, no? So we'll call this flux enclosed by the C1 will be 2q by epsilon naught. Flux enclosed by the blue color cube will enclose 3q plus 2q. Total will be 5q by epsilon naught. So ratio of flux phi1 by phi2. 2q by epsilon naught 2 by pi. सर अगेन सर लाइक आप इसको 5q क्यों ले रहे हैं? 3q एंड 2q दोनों कौन से बड़े क्यूब में है? 2q है वो एक छोटा वाला क्यूब में है, जो चार्ज एनक्लोज है वही नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूट करता है। सर अगर आप आउटसाइड एक चार्ज नेट फ्लक्स ग्रीन वाला क्यूब ओनली 2q एंड ब्लू वाला क्यूब ओनली ड्यू टू 3q एंड 2q। सर व्हाट अबाउट प्लस q? जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ कोर्स ड्यू टू प्लस q है वो यहाँ पे एंटर होकर बाहर निकलता है। नेट फ्लक्स भी ओनली ड्यू टू दिस क्यूब। Fine. These are very important. Gauss law, very, very, very important. Flux equal to Q by epsilon naught. जो चार्ज गॉसियन सरफेस में उसी के वजह से नेट फ्लक्स होता है. The net flux will be only due to charge enclosed. I think okay. Yeah, we'll. Okay, this completes your January shift 2024 Electrostatics PYQ. तो बहुत सारे जो हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, ज्यादातर क्वेश्चंस पॉइंट चार्ज, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और एक बेसिक फ्लक्स, देखो तरह लगे ऑलमोस्ट 17 क्वेश्चन सर. जो भी क्वेश्चन पूछे जस्ट पॉइंट चार्ज, कुलम्ब्स लॉ. नेक्स्ट बेसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड, टॉर्क और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, डाइपोल मोमेंट कितना है. वेरी सिंपल है ना, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मत करो यार, सिंपल है. व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सेपरेशन, थोड़ा सा सेपरेशन उसको डाइपोल. No, reduce to dipole on the field on the bisected distance. The Gauss law, the flux concept. Fine. I think एक घंटे में आप सब रिवाइज कर सकते हैं. theory first. Read theory. Don't do any problems. Read theory. अगर आप theory आपको concept clarity रहे तो then do the problem. बिना concept clarity problem solve करना, उधर इधर वीडियो देखना, कुछ भी आपको फायदा नहीं होता है. इंस्पिरेशन वीडियोस क्या 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 मिलता है तुम वो इंस्पिरेशन वीडियो देख के? क्लियरली लर्न चैप्टर, 2-3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, उसके बाद ओके फाइन फॉर्मूला से याद करो, देन सॉल्व द प्रॉब्लम. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज इंपॉर्टेंट वंस अगेन? पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड द बेसिक गॉस लॉ. एंड नेक्स्ट कंडक्टर्स. Electric field due to conducting sphere, electric field due to conducting sheet. Okay, fine. So, yes, the next, the April shift in the next week. Thank you, everyone. So, requesting everyone to please share, like, and subscribe our videos. So, without your support, I will not be in a better position. So, I am here because of you people, because of your support only. I'm surviving because of your support. Okay, thank you. Thanks for great support. All the best. Revise all the formulas. Bye. Take care.